हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 2 फरवरी 2023, दिन है थर्सडे, और आज हम करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट पेज पे बजट जो 2023 की आ चुकी है तो उसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि टैक्स रिलीफ फॉर द स्टैंडर्ड सैलरीड मिडिल क्लास स्कीम फॉर द are state and tribal group, scope for the women, MSMEs, and job for the youth in effort to smooth several vote bank before the 2024 Lok Sabha election. With global economy adrift, Finance Minister Sirma Sitharaman has out kiya crowd out to no arkan for the Indian in her fifth union budget for trying to nudge domestic consumption and recruitment private investment upward, while also seeking to create feel good factor among the specific segment of voters as the government gear up to 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जीरो टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वेडनेसडे में अनाउंस किया कि 7 लाख तक ईयरली इनकम करते हैं उनको इनकम टैक्स के रिजीम से छूट दी जाएगी, और ऑल बी अलाउड टू एग्जम्पशन इन इन्वेस्टमेंट। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल PMAY शेयर राइज बाय द 66% विथ मोर फोकस ऑन टियर 2 टियर 3। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 66% की उछाल देखी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑल्सो अनाउंस किया गया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किए जाएंगे विच विल बी क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 2 टियर 3 सिटी। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है। अडानी कॉल ऑफ 20,000 करोड़ FPO स्टॉक टेक बीटिंग। जो अडानी ग्रुप है उसने फ्लैगशिप किया है कि अडानी इंटरप्राइज की जो ड्रॉप की गई है 28% शेयर में गिरावट। तो उसके बाद में अहमदाबाद जो ग्रुप कंपनी है वेडनेसडे नाइट को डिसाइड किया है कि 20,000 करोड़ की जो FPO आने वाली थी उसको क्रब किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मोबाइल फ़ोन और टीवी चीपर होंगे, टॉय बाइसाइकिल और ऑटोमोबाइल डेयर होंगे। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। प्लान टू रिड्यूस नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन गुड एंड अदर देन द टेक्सटाइल एग्रीकल्चर फ्रॉम द 21 to 30। फाइनेंस मिनिस्टर with view to promoting export and boosting the domestic manufacturing, enhance the value addition। यूनियन बजट में प्रपोज किया गया है कि नंबर ऑफ चेंजेस to the custom duty regime which is like to make mobile phone and TV cheaper and certain class of automobiles including EV and as well the toy bicycle dearer। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। लैब ग्रोन डायमंड गेट R&D ग्रांट ड्यूटी कस्ट बूट। टू हार्नेस पोटेंशियल ऑफ लैब ग्रोन डायमंड एंड सिस्टमेटिक डायमंड को सेगमेंट को यूनियन बजट प्रेजेंट किए रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लेड एम्फेसिस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट मेक इट टू कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया है। एग्जेप्शन ऑन हाई लेवल वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीडिंग फंड। यूनियन बजट 2023-24 में प्रपोज किया गया लिमिट टू इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द प्रोसीड ऑफ हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मूट करा जाएगा। पार्ट ऑफ द एम्फेसाइज ऑन बेटर टारगेटिंग टैक्स कंसेशन एंड द एग्जेम्पशन प्रपोजल मीन्स दैट ओनली इनकम फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एग्रीवेटेड प्रीमियम अप टू 5 लाख विल बी एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। सिल्वर टू गेट कॉस्टली आज गवर्नमेंट राइज बेसिक कस्टम ड्यूटी टू 10%। जो सिल्वर एंड सिल्वर ज्वेलरी है उसको बिकम करा जाएगा एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट ने वेडनेसडे में अनाउंस किया है कि वो इंक्रीजिंग कर रहे हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD ऑन सिल्वर बोथ डोर एंड सेमी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 10% क्रब इम्पोर्ट में। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। पान टू बी यूज एज ए कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द डिजिटल सिस्टम। जो पान कार्ड होती है उसको परमानेंट अकाउंट नंबर will be used as a common identifier for the all digital system specific government agency। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। बजट यूफोरिया फ्लेज आउट इन कैपिटल मार्केट आज अडानी स्टॉक स्लम। जो बजट के आने में कैपिटल मार्केट में थोड़ी सी उछाल देखी गई थी, पर अडानी ग्रुप की स्लम स्टॉक में स्लम गई है क्योंकि 28% की गिरावट देखी गई है अडानी ग्रुप के शेयर में। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। शेयर ऑफ अडानी ग्रुप फ्रीम टेकिंग ए बीटिंग ऑन द bonus wipe out to the gain on capital market repeatedly in early hour of trading following the positive response to the presentation of union budget on Wednesday। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। बजट प्रपोज अमेंडमेंट टू चेंज ऑफ गिफ्ट IFC। यूनियन बजट में प्रपोज किया गया सेवरल मेजर टू इन्हांस द बिजनेस एक्टिविटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी
इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड। बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अप टू करा जाएगा और ऐप फॉर द टूरिस्ट एंड रिटेल आउटलेट फॉर द हैंडीक्राफ्ट टू बी डेवलप, बट द बजट एलोकेशन रिमेन द स्टैटिक एट द 2,400 crore. Industry representative disappointed with lack of announcement on the infrastructure status for the sector. जो अप टू 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको डेवलप किया जाएगा। इसको इन्फॉर्मर ड्राइविंग ऐप क्रिएट टू टूरिस्ट एंड न्यूडिटी मॉल्स विल बी सेटअप इन स्टेट कैपिटल टू शोकेस द हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोडक्ट विथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गेट स्कोप। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि न्यू कोऑपरेटिव दैट कमर्शियलाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बिफोर द March 31, 2024 shall be get benefit of lower tax rate 50% as is presently available to new manufacturing companies, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। KYC process to be simplified, DigiLocker to be one stop shop for uploading details. Financial institution will be able to have to risk-based know your customer KYC policy instead of the one size fit for all. One, Finance Minister निर्मला सीतारमण said while the presenting Union Budget 2024, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। Social Security cut IRIC trade union allocation to Labor Ministry is also Social Security scheme so a dip in budget, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। एलोकेशन किया जाएगा 7,000 करोड़ फॉर फेज 3 ऑफ ई कोर्ट विल इम्प्रूव द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, रिजिजू। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एलोकेट कर रहे हैं 7,000 करोड़ फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट दैट एम्स टू एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे डिफेंस बजट राइज 13%, फाइनेंशियल ईयर 23 रिवाइज फॉर द पेंशन राइज। Capital expenditure for modernization of military jumps 6.7% to 1.62 lakh crore. Financial year 23 revised the estimate for the pensions reduced 33,719 crore. यूनियन बजट एलोकेशन जो 5.9 लाख करोड़ था डिफेंस में 30% इंक्रीज देखी गई है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम द लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गेट 8% लेस देन प्रीवियस ईयर एट 12,500 करोड़। जो एक्सपेंडिचर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की हैज बीन सेल्स बाय द 8% इन 2023-24 यूनियन बजट ड्रॉन बाय द 12,543 करोड़ फ्रॉम द 13,700 करोड़ इन द प्रीवियस बजट एस्टिमेट, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर मूट इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू प्रमोट रीडिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रपोज किया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग द नेशनल बुक ट्रस्ट फॉर द बिल्डिंग कल्चर ऑफ रीडिंग एंड मेक अप टू पैंडेमिक टाइम लर्निंग लॉसेस, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे मनरेगा फंड कट बाय द 33% टू 60,000 करोड़। एक्टिविटीज जो एक्यूज कर रहे हैं सेंटर टू किलिंग द लॉ एंड नथिंग द एलोकेशन डज नॉट इवन मीट टू द मिनिमम थ्रेशोल्ड शुड हैव बीन डबल फ्रॉम द करंट 60,000 करोड़ merely provide eligible household with the 40 days work of instantly legally granted 100 in line of recent trending or slashing of the allocation for the flagship rural job scheme. यूनियन बजट एलोकेशन में ओनली 60,000 करोड़ दिया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा के द्वारा, तो 18% लोअर देन द 73,000 बजट एस्टिमेट फॉर द स्कीम फॉर द करंट ईयर एंड 33% लोअर देन द 89,000 करंट रिवाइज एस्टिमेट, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। फंड फॉर द माइनॉरिटी स्कीम स्लैश्ड बाय द 38% फ्रॉम द लास्ट ईयर। जो बजट एलोकेशन है मिनिस्ट्री अफेयर रिड्यूस किया गया है 38% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू ईयर 2022-2023। सेवरल स्कॉलरशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम गोट मेजर फंड कट इंक्लूडिंग द मेरिट कम मीन्स scholarship of professional and technical course for student minority community. The scheme have been also allocated fund for the 44 crore this year, while the budget for the same was 365 crore last year, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है।
19.6% हाइक इन द ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, एलोकेशन टू आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट डबल। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसको रिवाइज किया गया है, नॉमिनल इंक्रीजिंग इन 19.6% यूनियन बजट में, सम ऑफ द 3,647 करोड़ अगेंस्ट द प्रीवियस बजट एस्टिमेटेड ऑफ द 3,050 करोड़। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। Center pitches for the 100% switch to mechanism swear cleaning, coming in the nearly 100 crore allocation for the this year budget for the newly named Namaste National Action Plan for the mechanism sanitization ecosystem. Finance Minister Nirmala Sitharaman ने वेडनेसडे में कहा कि यूनियन बजट वाज लुकिंग फॉर अनेबल 100% मैकेनिकल डिसोल्जिंग स्पेसिफिक टैंक एंड सीवरेज इन ऑल द सिटी टाउन्स। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। Major thrust plan for the green energy, 35,000 crore have been earned mark for the priority capital investment of grid solar project, which is constitute less than the 5% solar power target to get the 360 crore. Custom duty wiped on the capital good and mechanical or lithium ion battery manufacturing, underlining of the commitment of accelerating the Indian economy translation to green energy. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच में नेक्स्ट में मेंशन किया है कि स्लीव ऑफ द स्कीम एट प्रमोटिंग द क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल लिविंग। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। कट इन एलोकेशन टू फार्म स्कीम फूड सब्सिडी ड्रॉप फ्लैग, यूनियन बजट के प्रेजेंट कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हेयर द वेडनेसडे, अनाउंस किए कि नंबर ऑफ द मेजर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एंड क्रेडिट टारगेट ऑफ द 20 लाख करोड़ विथ फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री डायरी फैशरी। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। एलोकेशन फॉर द फूड सेक्टर सच एज ए फूड सब्सिडीज हाउएवर सॉ द ड्रास्टिकल फॉल इन इन्वाइटिंग द क्रिटिसिज्म फॉर द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एलोकेशन अप टू 50% एट द 16,361 करोड़। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो रिसीव कर रहे हैं एलोकेशन ऑफ 16,361 करोड़ इन द यूनियन बजट एंड नॉमिनल इंक्रीजिंग इन 50% ऑफ प्रीवियस बजट एस्टिमेट बिटवीन द 2021-2022। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉर द ELC कॉटन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रेपलर कॉटन व्हिच इज लार्जली टू इम्पोर्ट नाउ is now to set up to get the impetus and the government proposed to cultural growth and value chain approach through the public private partnership। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रेलवे गेट द आउटले ऑफ द 2.4 लाख करोड़। Sweeney Besant said the higher outlay will be used to ramp up the production of Vande Bharat train, which will now to manufacturing at the Sonipat, Rail Valley and Lathur. And apart from the Chennai, he said the operating ratio of the utility of the subsidized 98.22% against the 107.39% in the 2021. In the outlay of the 2.4 lakh crore for the financial year 2023-2024 compared to the 1 lakh crore 4 lakh crore in the 2020-2023, Finance Minister Sinha in her budget speech Wednesday said the outlay for the railway has 9 times amount provided 2013-14. Railway Ministry has unable to spend 1.35 lakh crore in 2021-2022 budget documents notes। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। गवर्नमेंट टू सेटअप ऑफ 100 5G लैब टू डेवलप न्यू एप्स, गवर्नमेंट प्रोसेसिंग करेगा 100 लैब टू डेवलपिंग एप्लीकेशन यूजिंग 5G सर्विस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। 3 center of the excellence of the AI also be set up. This measure will be realize new range of opportunity, business model and employment potential, said the union budget present by the finance minister on Wednesday। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। 50 additional airport helipad to be received। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया कि वाइबल करेंगे 50 एडिशनल एयरपोर्ट हेलीपोर्ट एंड वाटर ड्रोम्स विथ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फॉर द इम्पोर्टेंट रीजनल एयर कनेक्टिविटी। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। व्हीकल स्पार्किंग पॉलिसी रिवाइव अप टू ड्राइविंग ग्रीन इकोनॉमी, जो यूनियन बजट था 2023-2024 लेड टू स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑफ व्हीकल स्पार्किंग पॉलिसी बाय द एप्लीकेटिंग एडिक्वेट फंड फॉर द रिप्लेस द व्हीकल ओवर द 15 ईयर्स। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे।
higher fund flow for the Jal Jeevan. 69,684 crore allocated to Central Mascrew Mission that aim to provide piped water to every rural household by the 2024 Swachh Bharat Mission that seek to sustain upon defecation free status in village get to the 77,000 crore. तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया with an eye of Lok Sabha election and decline the approaching for the government ambitious bid to provide piped water every rural household to by the 2024 Union Government Marquee Jal Jeevan Mission allocation of the 69,684 crore up to from the 54,808 crore in the Jal Shakti Ministry in the expected to spend in the current financial year. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम लिमिट डबल टू 30 लाख जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वेडनेसडे में प्रपोज किया कि डबल टू डिपॉजिट लिमिट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग 30 लाख एंड मंथली इनकम अकाउंट स्कीम ऑफ 9 लाख. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए वुमेन गेट ए वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वेडनेसडे में अनाउंस किया कि वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम करेंगे वुमेन के लिए कमर्समेंट द सेलिब्रेशन ऑफ द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए मोर फॉर द हेल्थ एंड लेस फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट. यूनियन बजट 2023-2024 अनाउंस द एलोकेशन ऑफ द 89,155 crore for the Ministry of Health, which 3.43 higher than the previous outlay of the 86,200.65 crore. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया 38,800 teachers support staff to be recruited for the Eklavya school. Union government will be hire 38,800 teachers and support staff for the 74 Eklavya model resident school for the tribal students across the country over the next 3 years. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वेडनेसडे में कहा तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए 50,000 crore for to spin of development of tribes. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वेडनेसडे में अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री पत्रुलिया वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG development mission to focus on the improving overall the social economic condition of 75 such group across the country. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो एडिटोरियल किए बजट दैट सिग्नल ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक सर्वे जो प्लेस किए गए थे पार्लियामेंट में बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर 2023-2024 have laid the emphasis on the point that India has to stage a remarkable broad-based recovery to the reach the level of income that exists before the outbreak of the novel coronavirus pandemic. There have been series of shock and began to with pandemic followed by the war between the Russia and Ukraine accompanying the sanctions that have been imposed from the West on Russia, slow down the recession in major part of the world and as the rise of inflation leading to sharp increasing in interest rate and followed by the capital outflow and pressure on the exchange rate. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ए राफ्ट फॉर द कंसेशन एम टू कंसोलिडेट while promoting the inclusive development. The budget give more to affiliate action than the poor. If budget making is a complex task, interpreting the union budget can be hazardous to given amount of the fine print that one had proved over. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5th बजट किया गया है. करंटली भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट फाइनल फुल फ्लेज वन बजट नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन टिक ऑल द राइट टू बॉक्सेस इन द फेस ऑफ इट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट that the ensure the prosperity of all, especially youth, women, farmer, other backward class, scheduled caste, scheduled tribe. A focus on the infrastructure and investment that serve to multiplier for the growth and employment policy to enable the green and environmental sustainability growth, rationalization of the direct tax and including the draft concession to the middle and salary class and pensioner, and most importantly doing all this while staying the course of financial consolidation and terminating the final budget first budget in Amrit Kal. Mr. Sirman sounded to full pledge of emphasizing the ruling dispensation of achievement of since 2014 when the Prime Minister Narendra Modi first assumed to office. Per capita income set had more than the double 1.9
7 lakh as result of economic growing being to world fifth largest and the government effort to ensure the better quality of living for the all. See also credit to increasing the formalization of the economy and widespread the developing of digital technology especially in the employment spar as the significant achievement. तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ग्रोथ डिस्कलेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्किप्ड. The much anticipated budget for 2023-2024 has been presented. Budget speech began with the self-congratulatory note. India has successfully overcome the trouble that come to the COVID-19 pandemic to large extent by ensuring the free food distribution scheme of the 800 million people other ongoing food security program, and it added that India has fully recovered from the output contraction after 1 year of emerging one of the world's fastest growing economy. In fact, while the commencement in the economic survey that was presented on the day preceding the budget, Finance Ministry Nirmala Sitharaman reportedly said the economy can now get on with the growth trajectory that it will changing the before the outbreak of the pandemic in 2020. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो ओपिनियन की है. सोशल सेक्टर हैज बीन शॉर्ट चेंजेस इन 1 सेकेंड. जो सोशल सेक्टर है इनिशिएटिव व्हिच कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव लाइफ एंड इम्प्रूव द ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम एंड इकोनॉमी रिवाइवल हैड रिसीव द इनएडिक्वेट एलोकेशन. नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ए बजट विदाउट ए विजन फॉर एग्रीकल्चर. Devised to advise factor in agriculture, government have cut to food and fertilizer subsidy allocated to title for the animal husbandry, dairy and fishery. Balance between the capital outlay and physical procedure. Budget provided thrust on capital expenditure and dodges to multiple transactions, but this long-term commitment and clear transaction path. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की है. Is judicial majoritarism justified? Why it is the judge have sought to have counting in order to resolve the disagreement among them? In case in a erroneous majority decision, is there a need to be highlight the malicious minority decision? As the recent majority judgment of the Supreme Court have demonstration come under the criticism, the majority judgment by the J. Nagarathnam is to be held by the challenging RBI institutional acquisition of central government. This is the question our blind expectation of the numerical majorities in judicial decision making. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. What is the government new policy for UPI for NRIs? NPCI has allowed to non-resident to be on board into the UPI ecosystem. Union Cabinet approved a 2,600 crore incentive to scheme promote rupee डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भूमि PI ट्रांजेक्शन. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. जनवरी 10 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI to international phone number to able to transact using UPI. A day later, Union Cabinet approved the incentive scheme to promotion rupee debit card and low value bhumi UPI transaction person to merchant in financial year 2023. Scheme has outlaid of 2,600 crore. तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. एंटी पोअर अपॉर्चुनिटी बजट. वेस्ट बंगाल के CM जो ममता बनर्जी उन्होंने कहा है न्यू टैक्स स्लैब विल नॉट ब्रिंग टू एनी रिलीफ टू कॉमन पीपल बिकॉज द प्राइजिंग प्राइस अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैव स्किप्ड इन कंट्री एंड बीजेपी गवर्नमेंट हैड नॉट फुलफिल एनी ऑफ इट्स प्रॉमिस से ममता. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. सेंटर फोल्ड एंड क्रिएट चीटेड बिहार अगेन से तेजस्वी यादव. जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और RJD के लीडर तेजस्वी यादव ने यूनियन गवर्नमेंट के जो फोल्ड और चीटेड कहा है पीपल को स्टेट ऑफ थ्रू इस बजट. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. वेविंग IT ऑन द FRP विल बी बूस्ट ए शुगर कैन इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र. फडणवीस स्टेट दैट यूनियन बजट विल गिव टू द मैसिव बूस्ट इन महाराष्ट्र शुगर कैन इंडस्ट्री. डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वेडनेसडे में कहा है. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. पटनायक एग्रीव एट द रिडक्शन ऑफ फंड फॉर द रूरल जॉब स्कीम. उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक्सप्रेस किया है कॉन्सर्न ओवर द फंडिंग
in the fund of Mahatma Gandhi नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड द फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। ब्रिक बात फ्रॉम सिखू एंड मन Bakulla from Lal. Union Budget 2023-2024 scope the sharp criticism Chief Minister of the Himachal Pradesh and Punjab, even been the Haryana Chief Minister held it up. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। पब्लिक अंडरटेकिंग ऑन प्राइवेसी पॉलिसी इन पेपर, सुप्रीम कोर्ट टू व्हाट्सअप। Court agreed with WhatsApp submission that it will able to be an undertaking given by the letter to government of on May 2021 in online instant messaging platform जो WhatsApp है in Supreme Court Wednesday में agree किया है कि undertaking it that will be no limit with access to user have to be not agreed with the 2021 privacy policy। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। प्रोटेक्शन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नॉट अवेलेबल टू मेल मेंबर से दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली की हाई कोर्ट है उसने स्टे किया है प्रोसीडिंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन केस वेयर ए मैन मोर टू लोकल कोर्ट एक्यूजिंग हिज वाइफ ऑफ द अडल्ट्री एंड टेकिंग द प्राइमा फेसिया व्यू दैट द प्रोटेक्शन अंडर द डीवी एक्ट इज नॉट अवेलेबल टू हस्बैंड। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। उड़ीसा में प्रूव टू बी फास्ट मूवर ऑन द PVTG डेवलपमेंट मिशन। जो आज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वेडनेसडे में अनाउंस किया कि लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG डेवलपमेंट मिशन इन द अंडर द स्ट्रेटजी ऑफ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप फैमिलीज एंड हैबिटेशन विद द बेसिक फैसिलिटी। उड़ीसा began to be the highest number of PVTG community in the country like to be identified the most। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सीएम स्लाम बजट कट इन हेल्थ एजुकेशन, ससोदिया फ्लैग लो टैक्स शेयर टू सिटी, केजरीवाल हैज नो concrete plan to lower inflation unemployment, deputy CM wants it more debt, union budget have proved to 1168 crore for Delhi and 2285 crore for the Delhi metro and counters BJP। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। will be able to save more now, say city salary and employment businessmen, tax relief from the salaried middle class promised Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Wednesday brought the smile to many in the city. People have said that reduce the tax burden will help them to overcome the finance address and university charges by the successive wave of COVID-19 inflation and the Russia-Ukraine war। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। Reduce the tax burden will be bring relief and more need to more employment opportunity. Income tax rebate announced by the union budget Wednesday revoked the mixed response from the city youth। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। Budget will lay a strong base to build a new developed India, PM। The first budget of Amritkal will fulfill the dream of poor and middle class and farmer, Modi say held the 10 lakh crore investment in infra, underlying the government effort to enhance the life of women। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे में टर्मिनेट किए हैं यूनियन बजट टू फास्ट बजट ऑफ अमृतकाल 25 ईयर प्रोबोट बिटवीन द इंडिया एंड 75 years of independence in the century and said that it will be lay strong foundation of building develop India। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए। यूके गवर्नमेंट डिफेंस बीबीसी इंडिपेंडेंस एफ्रीम टाइस विथ इंडिया। यूके के जो गवर्नमेंट है वेडनेसडे में डिफाइन किए हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द बीबीसी एंड रिलेशनशिप ऑफ यूके हैज विथ इंडिया आफ्टर द सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मोदी गवर्नमेंट इन इंडिया। यूके राइज द स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी। Tax regime signal BJP note to core middle class support base ahead of the 2024 poll। And meeting of Union Council of Ministers had by the Sunday, Prime Minister Narendra Modi argues its ministerial colleagues to improve the communication with the people and especially with middle class on programs that directly indirectly benefit them. It is the budget hint of the what has come with the budget present Wednesday with the major changing and personal income tax slab, doubling the rebate and the bring down to the effect highest rate of tax from the 42% to 39%। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। मार्जिनल हाइक इन फंड फॉर द होम मिनिस्ट्री एलोकेशन फॉर द सेंसेक्स स्लैश बाय द हाफ।
in indication that the Sensex exercise meant to be complete in 2021, but the delay in because the COVID-19 pandemic may not be conducted in 2023-2024 union budget allocation under the census survey and statistic had the slot 1,565 crore from the 3,676 crore allocation in the 2022-2023. The previous census had the 2011. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए. Finance Minister proposed the amendment to banking law. Charge proposed in budget on the Banking Regulation Act and Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act to improve the bank governance and the enhance the investor protection. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. इंडिया यूएस सेटअप टू स्ट्रैटेजिक टाई विथ टेक प्लान. India US on the Tuesday launched a program to enhance the strategic partnership with the delegation led by the National Security Advisor NSA Ajit Doval and his American counterpart Jackal Sullivan, meeting in the Washington for the inaugural dialogue of the initiative of critical and emerging technology. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो वर्ल्ड की है. स्वीडन कांट जॉइंट नेटो इफ बर्निंग ऑफ कोरना इज अलाउड एर्दोगान. और दुबई की न्यूज़ है. सऊदी एक्सपेक्टेड टू शार्पली अंडर द किंग सलमान एंड MBS राइट ग्रुप. लंदन की न्यूज़ है. यूके टीचर एंड सिविल सर्वेंट जॉइंट स्ट्राइक ऑन वॉकआउट वेडनेसडे. पेशावर में 17 सस्पेक्ट हेल्ड इन मस्क्यू ब्लास्ट. पाक आर्मी चीफ भो स्ट्रिक्ट एक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल्स पर. रशिया गेन इन डोनेक्स कंपनी. यूक्रेन सीक फाइटर जेट फ्रॉम द एलाइज. Zelensky government is lobbying neighboring and Western nation for aircraft, and France says that there is no taboo for supplying plans, while the USA and UK remaining the reluctant. Washington to send 2.2 billion worth of additional military package. तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया. FBI research President Biden Delaware home in the classified document proof. FBI conducting a planned search for the Wednesday. President Joe Biden Ruthwood Beach Delaware's home in as part of the investigation into the potential misleading and classified document. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया. पाक इन्फ्लेशन राइज टू 48 year higher as the IMF visit for talks. Inflation rising in 48 years high in the crisis hit Pakistan, where the International Monetary Fund is visiting the urgent talks, and according to data released on the Wednesday by the country statistic bureau. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया. USA destroyed arms control pact Moscow. The Kremlin accused Washington to Wednesday destroying the weapon control agreement after the US said that Russia is not complying with the last remaining arms pact new START treaty. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया. Myanmar street MP in protest on the coup anniversary. Street impeded and shop closed in protest across the Myanmar Wednesday, second anniversary of the coup that the toppled Aung San Suu Kyi government, and with the जनता hitting it may be extended to state emergency and delay in election. तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल दिए गए. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे. नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट की. तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतनी ही. थैंक यू. जय हिंद. वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.